Assalamu alaikum everyone. So this video is actually in a continuation और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसी की कंटिन्यूएशन में है. सो प्रीवियसली वी डिस्कस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. सो उसी को मजीद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं टू अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. सो अब हम आ रहे हैं लाइक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज और वो कैटेगरीज डिफाइन हुई हुई हैं बाय स्ट्रक्चर्स. सो और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं सेंटेंसेस के. ये जो टाइप्स हैं हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पे से समझ रहे हैं, ठीक है. इसी वजह से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द बेस एंड द फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. इसीलिए हमने पहले इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़े थे. सो अगर आपको क्लॉज समझ में आ जाता है, आपको बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आता है, तो आपको बाकी सारी टाइप्स जो है ना वो बहुत इजीली समझ आ जाएंगी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट. But let me first show you different types of sentences by structure. So, sentences are divided into four categories, into four types: simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. ये structure की बुनियाद पे categorize हुई है. Remember कि अगर आप sentence की nature के हिसाब से आप उसको categorize करें, so then you would find interrogative sentences, imperative sentences, then, there are other types of sentences too. लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंसेस को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एंड देन वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो इस वक्त जो है हम लोग बेसिक टू जो हमारी शुरू की स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को पहले डिस्कस करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, बिकॉज इन्हीं को ही आप एक्सटेंड कर लें तो आगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं. सो व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस and how do we define it? A simple sentence contains one independent clause. I'm sure अगर आपको याद हो और अगर नहीं याद तो आप पुरानी वीडियो दोबारा से देखें कि one independent clause is a clause which can stand on its own. It has a subject, it has a predicate, that means it has a subject, it has a verb, that means an action, and then it conveys a proper thought, a proper idea. It's not incomplete in its sense, right? So that's one independent clause. So अगर आप कहते हैं कि one independent clause is a sentence, then you're absolutely right. So one simple sentence is also an independent clause. एक independent clause आपका एक sentence बनता है. So a simple sentence has one independent clause. So एक simple clause एक पूरा sentence भी होता है, right? So you have certain examples here, like Asim rides his bike to school. So you see that there's this subject, which is Asim, and then there's this action, which is Asim doing, and Asim is actually riding the bike. और फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट भी है जो पूरा एक कंप्लीट थॉट आपको बता रहा है कि आसिम जो है वो बाइक चलाता है स्कूल पे, या फिर स्कूल बाइक पे जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है. एंड देन यू हैव अनदर and another example: who is your best friend? So it's an interrogative statement. ये question है, लेकिन again you know कि इसमें बात क्या हो रही है. It's complete and ये कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ पे इसको एक और clause की ज़रूरत हो to make a complete statement, to make a complete sentence. So it has one clause, and one independent clause is actually one simple sentence. ठीक है. So इसमें कोई ऐसा hard and fast या rocket science नहीं है. It's very easy. The second type is compound sentences, which is again very easy because once you combine two independent clauses, you actually form a compound sentence. And a compound sentence, just remember one thing, that when we are trying to combine two compound sentences, we need to combine them together, we need to link them together with the help of a coordinating conjunction. अगर आपको याद हो, पिछले हमने डिपेंडेंट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. और दूसरा जो टाइप है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिनको हम बहुत इजी और इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम फैन वॉइस कहते हैं: फॉर एंड नॉर बट और येट सो. सो यू नीड टू कंबाइन two independent clauses with the help of a coordinating conjunction. So जब आप दो independent clauses को आपस में combine करते हैं, it forms a compound sentence. ठीक है, तो आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे. लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन और भी है कि जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू नीड टू ऐड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. समटाइम्स पंक्चुएशन से या कॉमा और जो हमारे पास सेमीकोलन है उससे भी आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. सो अभी हम ये देखते हैं. पहले तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से देखते हैं कि आपके पास कौन से सेंटेंस बने. She wanted to go on vacation, so she saved up her money.
So this is, she wanted to go on vacation is actually the first independent clause, and then you see a coordinating conjunction which is so. She saved up her money. You see a subject, you see an action, you see a complete statement here, and ये combine हुआ है, ये link हुआ है with the help of a coordinating conjunction. लेकिन remember that whenever you are putting a coordinating conjunction, you need to add a comma before the next independent clause. आपने दूसरे independent clause को लिखने से पहले यानी coordinating conjunction के साथ उसको लिखने से पहले उसको आपने लिंक करना है with the help of a comma. So comma हमेशा आपने ऐड करना है coordinating conjunction से पहले. So for example इसमें third example है Tahira loves to read, comma, and she also loves to hike. So Tahira loves to read is one independent clause and she also loves to hike is the second independent clause. So यहाँ पे the conjunction which is linking them together is and और इसी से पहले आपको यहाँ comma भी नजर आएगा. So it's a general rule and we need to follow this. ये भी एक dynamic है, एक rule है. So एक तो ये तरीका है. This is another way. You can also make a compound sentence by joining two logically related independent clauses by using a semicolon and a transition. ठीक है, आप transition और semicolon के साथ भी एक compound sentence बना सकते हैं without adding a coordinating conjunction. So semicolon से आप कैसे बना सकते हैं एक compound sentence? Let's see. आपके पास अगर दो independent clauses हैं, आप उनको combine कर दें with a semicolon without adding a coordinating conjunction. So आपका एक ये तरीका भी है to form a compound sentence. For example, I love living in the city. There are so many things to do here, right? तो आपका पहला independent clause and then you're linking it with another independent clause with the help of a semicolon. So this is one way to form a compound or to make or to write a compound sentence. Another way is to add a transitional word और याद रखें कि transitional word का मकसद ही लिंक करना होता है. जैसे आप और बहुत सारे कंजंक्शंस का काम भी लिंक करना है तो ट्रांजिशनल वर्ड्स का भी काम है लिंक करना. ये कौन से वर्ड्स हैं? हाउएवर, देयरफॉर, हेंस, डज. आपको इसकी पूरी एक लिस्ट मिल सकती है इफ यू जस्ट ट्राई टू सर्च. तो आपको ट्रांजिशनल फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स की पूरी लिस्ट मिल सकती है. लेकिन याद रखें कि एक रूल है, वो ये है कि ट्रांजिशनल वर्ड अगर आप यूज करें इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस or like if you want to combine two independent clauses with the help of a transitional word, then remember that a semicolon would be placed before a transitional word and a comma would be placed after using the transitional word, right? So agar aap dekhein, I love Karachi, however I hate the traffic. Sahi. So I love Karachi ke baad you have placed or you can see a semicolon here. That means transitional word से पहले semicolon है and comma transitional word के बाद है. ये भी एक rule है which needs to be followed. और अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले comma लगा दें और बाद में semicolon लगाएं transition के तो फिर it would be considered wrong. ठीक है? So there are two different ways, like I would say three different ways to form a compound sentence. One is by simply adding a coordinating conjunction, and you can add a coordinating conjunction with the help of a comma और आप ये दो independent clauses बना सकते हैं compound sentence बनाने के लिए. I mean दो independent clauses को आप जोड़ सकते हैं, link कर सकते हैं with the help of a coordinating conjunction and a comma. Another way is by using a semicolon, and the third way is using a transitional word. But remember that before a transitional word, you have to place a semicolon, and after a transitional word, you have to place a comma. बाकी आपके रह गए हैं complex sentence and compound complex sentence, और ये दोनों discuss होंगे in the third part of this video or this topic. Thank you very much.